अब हाथ मत जोड़ लेना आप। नहीं नहीं, हाथ जोड़ना मतलब अपने लिए नहीं, आप उनके लिए हाथ मत जोड़ लेना। आप समझा दो मेरे को कि ऐसे 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 एटीट्यूड वाले आदमी के लिए हम लोग का क्या अप्रोच होनी चाहिए। अच्छा, ये नेता भी हैं, ये पुलिस कर्मियों के नेता भी हैं ये। पढ़िए क्या, इन्होंने सबका ठेका ले रखा है कि आपने फलाने के खिलाफ आपने ऐसा किया, आप ऐसा किया। तो इनकी आंखों में भी शर्म नहीं है और ये महाबदतमीज किसी भी इंसान दिख रहे हैं, शक्ल से दिख रहे हैं। अब इनकी जगह कारागार ही हो सकती है। ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझ रहे हैं और न्यायाधीश के खिलाफ में अनर्गल आक्षेप लगा रहे हैं। ये पैरा 5 में देखा है। तो ये तो कांस्टेबल लायक नहीं है। सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के आदमी जज के ऊपर, जबकि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पर अनर्गल स्टेटमेंट देता है। जब कोर्ट इनसे जवाब मांगती है तो बोलते हैं कि आपका ये व्यवहार तो और लोगों के साथ भी ऐसे ही रहा है और आपकी हम शिकायत करेंगे। और हाई कोर्ट जज का नाम लेते हैं ये। इनकी आप जरा हिमाकत तो देखिए, किसी भी पद पर रहने का कोई हक है। जो सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो सिर्फ इस बात के ऊपर से इतना ज़्यादा नाराज हो गया कि तुमने हमको ऐसे कैसे कह दिया कि तो हम लेट आए हैं। मतलब जज ये भी सवाल नहीं कर सकता कि आप इतना लेट क्यों आए, और फिर उसको धमकी दे रहे हैं जज को आप कि तुम्हारी शिकायत मैं डीजी पुलिस से करूंगा और हाईकोर्ट जज से करूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता जज साहब का, नाम लिखा है इन्होंने, और उसमें भी कोई सम्मानपूर्वक नाम नहीं लिखा है, जैसे अपने दोस्त यारों से के बारे में बोल रहे हो, हम फलाने से बोलेंगे। जिस आदमी के अंदर इस प्रकार की बदतमीजी कूट के भरी हो, उस आदमी को आप क्या समझते हैं? हम लोग को छोड़ देना चाहिए। अपने कंडक्ट को अपॉलॉजी मांगने के बजाय आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो जज के ऊपर कि आपने फलाने पुलिस वाले के साथ भी ऐसे बिहेव किया था, और आप उम्मीद करते हो कि हाई कोर्ट में हम आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें। तो क्या हम अपनी जुडिशरी को, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिमोरलाइज करेंगे क्या, ताकि आप वहां जाके बोलें देखा मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर देकर चला आया हूं, अब बोलो क्या बोलते हो। होगा क्या, पब्लिक को पता होना चाहिए कि एक पुलिस का आदमी कोर्ट में कैसे बिहेव किया और क्या स्टेटमेंट प्रेस को दिया। इससे बड़ा एग्रेवेशन और क्या हो सकता है। ना कि आपने सिर्फ कोर्ट में मिसबिहेव किया, आपने उस बात को पब्लिक में प्रेस के माध्यम से बताई। अभी भी आंखों में शर्म नहीं है, अभी भी वो ऐसे घूर रहे हैं हम लोगों को कि ठीक है जज साहब आप भी बोलो, आपके खिलाफ भी कुछ बोलता ही होगा। तुमने कुछ कर्म किए नीचे, उसका फल तो भुगतना पड़ेगा तुमको। An officer is not expected to misbehave. Where is the reference order? What is there in the sealed envelope? Mr. Modi, do you have a reference order? We have a reference petition. Order. Is only the first order is dated 30th of January 2023. What is the last order sheet? Last order sheet is last week they were asked to submit a reply. Just a minute. So constable, head constable, and then ASI, and then sub constable. उसके बाद में ज्वाइन करने के बाद में एग्जामिनेशन पास किया, ऐसा मैं समझ रहा हूँ, और 2012 में SI। ऐसा ज़रूर साहब, you are a senior advocate. I have tolerated him thrice right now.
he interrupted you and tried to speak. Either you withdraw and let me handle him, or if you want to argue on his behalf, then ask him not to speak. You seek complete instruction, then argue. If you do not have instructions, don't. It's a serious matter. It's a criminal contempt of court. This man go to jail also. This man may be removed from service also. So if he is hyper, then he will show him his place. Please don't take it so casually and please don't smile. I mean what I say. It's a serious matter. Have you seen the last order sheet? He has aggravated the contempt. Read the order sheet. Please read the order sheet. What my Lord the Chief Justice has written while sitting with in combination with my Lord Justice Phadke on 13th of March. Read the order. The accused is present in the court. He submits that he may be granted time to file additional reply. The accused has already filed his reply. He has submitted his apology petition to drop the contempt proceeding. Apparently, he is not pressing the said application for furnishing apology to the court. He wants to contest the matter on merit. Therefore, he seeks time to file his reply. In his further contention that notwithstanding the alleged incident, he has chosen to make remarks even against the judge who has initiated the proceeding for contempt. Statements are made against the very judge himself. Be that as it may, we are of the considered view that not only the apology is being not pressed by the accused, but he seems to be aggravating the contempt by making allegation on even against the judge who has initiated the proceeding for contempt. Now what do you say about it? You were present in the court. Did he say so or not? His statement is recorded by the bench. If this is his conduct, that he is not even prepared to budge, how do we expect us to be relentful? Let us know. If he is not prepared to behave himself and still has an audacity to say that still he makes an allegation against the judge. If this is the way, and there's a demeanor of this person, how he should be dealt with the court, dealing with the criminal contempt of court? You are senior advocate, you please assist us. If before the bench, the contemner says that he is still, the words used are, that even against the judge, he has chosen to make remarks even against the judge who has initiated the proceedings for contempt. Statements are made against the very judge himself. Do you think he deserves to be in service? The person who has this, look at the daredevilness before a bench headed by the Chief Justice. He makes a statement of the nature recorded in the order sheet. And he is just a sub-inspector. Sub-inspector? Huh? In the first leg of his submission, he said, I tender an apology. In the second breath, he says, why we should relent? हाँ, अब हाथ मत जोड़ लेना आप. हाँ. नहीं, हाथ जोड़ना मतलब अपने लिए नहीं, आप उनके लिए हाथ मत जोड़ लेना. आप समझा दो मेरे को कि ऐसे एटीट्यूड वाले आदमी के लिए हम लोग का क्या अप्रोच होनी चाहिए.
filed a specific affidavit? जो आपने रिप्लाई पेश किया है? आज भी किया है। कहाँ है, दिखाइए रिप्लाई आपका। क्या कहा है आपने? क्या कहा है आपने? मैंने सब ये कहा है, एपोलॉजी टेंडर की थी मैंने 9/1/2020 को भी, और आज भी मैं अनकंडीशनल। पढ़ लीजिए ना क्या लिखा है आपने। Para to before the London Special Judge, Jabra District Agrawal at the earliest and immediately after receiving notice dated 9/20, answering respondent on 9/2020 itself has submitted the unconditional apology, a copy of which is at Annexure R1. Or once again answering respondent is tendering its sincere unconditional apology before this honorable court with further respect to purge him from the above mentioned contempt proceedings. Has he manipulated the evidence or record? No. What is 228? 228 to insult Naturally, you have made false statement, and 345 proceedings are initiated against you. Where is the reference order? Let us see what have you done there. Where is the reference order? Annexure? Page 1 से start. Have you filed it? What is the order sheet dated? 24 फरवरी 2022 को कोर्ट में रिसीव हुआ। 24 फरवरी 2020। 24th February. It is in English. Running. And who is Shailendra Kumar? Execution clerk. Then Suman Mahar, stenographer. Then Rohit Kumar Singh, board peon. Then Dharmendra Saimal, stenographer. Kumari Kavita Rathore, assistant grade 3, deposition writer. Sapna Verma, assistant grade 3. Punjab Singh Gurjar, APP. And then Salil Shrivastava, news reporter. और उसने कहा क्या वहां पर? अच्छा, ये नेता भी हैं। इनका पैरा 5 में देखा आपने क्या कहा इन्होंने? ये पुलिस कर्मियों के नेता भी हैं ये। पढ़िए क्या लिखा है। इन्होंने सबका ठेका ले रखा है कि आपने फलाने के खिलाफ आपने ऐसा किया, आप ऐसा किया। तो इनकी आंखों में भी शर्म नहीं है और ये महा बदतमीज किसी भी इंसान दिख रहे हैं, शक्ल से दिख रहे हैं। अब इनकी जगह कारागार ही हो सकती है। ये जो रिप्लाई पेश किया है इन्होंने, ये अपने आप को न्यायपालिका से ऊपर समझ रहे हैं और न्यायाधीश के खिलाफ में अनर्गल आक्षेप लगा रहे हैं। ये पैरा 5 में देखा आपने? आक्षेप लगाया कि नहीं लगाया इन्होंने? इनका स्तर क्या है, क्या था उन 2020 में, क्या थे ये है? तो ये तो कांस्टेबल लायक नहीं है। सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के आदमी जज के ऊपर, जबकि कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, उस पे अनर्गल स्टेटमेंट देता है। जब कोर्ट इनसे जवाब मांगती है तो बोलते हैं कि आपका ये व्यवहार तो और लोगों के साथ भी ऐसे ही रहा है और आपकी हम शिकायत करेंगे।
हाई कोर्ट जज का नाम लेते हैं ये। इनकी आप जरा हिमाकत तो देखिए। इनको 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 कार्यपालिका में किसी भी पद पर रहने का कोई हक है? आप ये बताइए। जो सब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी जो सिर्फ इस बात के ऊपर से इतना ज्यादा नाराज हो गया कि तुमने हमको ऐसे कैसे कह दिया कि तो हम लेट आए हैं। मतलब जज ये भी सवाल नहीं कर सकता कि आप इतना लेट क्यों आए, और फिर उसको धमकी दे रहे हैं जज को आप कि तुम्हारी शिकायत मैं डीजी पुलिस से करूंगा और हाईकोर्ट जज से करूंगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता जज साहब का, नाम लिखा है इन्होंने, और उसमें भी कोई सम्मानपूर्वक नाम नहीं लिखा है, जैसे अपने दोस्त यारों से के बारे में बोल रहे हो, हम फलाने से बोलेंगे। जिस आदमी के अंदर इस प्रकार की बदतमीजी कूट कूट के भरी हो, उस आदमी को आप क्या समझते हैं? हम लोग को छोड़ देना चाहिए। और इसका इफेक्ट क्या होगा लोअर जुडिशरी में? आज सीनियर जज को आप इस प्रकार से आप बात करते हो, ये आपका डेमेनर है, ये कंडक्ट है, तो हाई कोर्ट से क्या उम्मीद करते हो कि हम अपने जज को इग्नोर करके जो उसके साथ में कोर्ट कार्रवाई के वक्त हुआ? इट्स अ केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इट्स अ क्लियर केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। You prepare yourself and argue finally. It is difficult for us to accept your apology. Look into the proceedings initiated by the judge, followed by statements of persons who were present in the court and who have consistently stated about his conduct in the court. And this is further aggravated with the kind of reply he has given in the court on 11/1, para 5. And on the top of it, his demeanor before the High Court on the last date of hearing before a bench headed by the Honorable Chief Justice. Have you seen that? After going through this reply, हाँ, situation much corrupting after going through this reply. Obviously, that is why it is written here. This is a reflection of his conduct. On 9/1, first he tenders apology, and on 11/1 he is making allegation against the judge in respect of some other incident. He is naming the persons in that para 5. आपने इनके साथ में ऐसा बिहेव किया, ऐसा बिहेव किया। लुक एट हिम। यानी अपने कंडक्ट को अपॉलॉजी मांगने के बजाय आप उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो जज के ऊपर कि आपने फलाने पुलिस वाले के साथ भी ऐसे बिहेव किया था, और आप उम्मीद करते हो कि हाई कोर्ट में हम आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लें। तो क्या हम अपनी जुडिशरी को, सबऑर्डिनेट जुडिशरी को डिमोरलाइज करेंगे क्या, ताकि आप वहां जाके बोलें देखा मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके चला आया हूं, अब बोलो क्या बोलते हो? ऐसा करना चाहते हैं क्या आप? दुधावत साहब सीनियर एडवोकेट है भाई, इनके कहने से हम मान भी जाए, शरीफ आदमी है ये भाई, इनका क्लाइंट भी शरीफ होगा, ये मानना तो मुश्किल है। आपकी शराफत इतनी हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं कि आप वो सुन सकते हैं पूरी तरीके से। आप हमें दलील दीजिए। मोदी साहब खड़े हैं सामने, इनसे पूछेंगे हम इनका क्या कहना है। आफ्टर इट्स अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। और लर्नेड जज ने ऐसे ही नहीं भेज दिया कागज। आफ्टर ड्यू इंक्वायरी
After recording of statements of witnesses, the reference has been made. Complete record is with us. And on the top of it, this person had the audacity to even speak to the press. The press man, Arya, who is that? The Arya. His statement is recorded. Who is that press fellow? Sahara. Salil Srivastava, news reporter. He says that yes, he has said such things outside in the court premises, outside the courtroom. And 2 CDs have been annexed. What else is required? You please tell us what is required. How can we say that judge was wrong? Or nothing of the kind happened in the courtroom before the lower court. You prepare yourself and let him be ready to go to jail. Prima facie. After seeing these CDs, we will ensure that these CDs played in the courtroom. And you hear what you have said, your client has said. And then let us know what we should do. Can we play this CD here? How do we have a system here? It should have a side slot in the screen. In the screen? Yes, it should have a side slot where it will. The big CD is there. Had it been a pen drive, probably it would have been possible. Huh? Can it be converted into pen drive? Yes. This we can do it in the courtroom itself. So what do you want? You want to argue today? Huh? All right, you argue. We will play the CD here also. नहीं यही होगा क्या? पब्लिक को पता होना चाहिए कि एक पुलिस का आदमी कोर्ट में कैसे बिहेव किया और क्या स्टेटमेंट प्रेस को दिया. इससे बड़ा एग्रेवेशन और क्या हो सकता है? ना कि आपने सिर्फ कोर्ट में मिसबिहेव किया, आपने उस बात को पब्लिक में प्रेस के माध्यम से बताई. इस प्रकार की तो आपका स्वभाव है, इस प्रकार का तो आपकी करतूतें हैं. 2018 के बाद में 2020 में गवाही के लिए उपस्थित हुए और जब उपस्थित हुए हैं 12 बजे तब पूछा गया कि देर में क्यों आए, तो इसी बात पर से ये सब झगड़ा. समन्स का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया है. लोगों ने भी कोर्ट में काम किया है. समन्स जब तक जवान की और गिरफ्तारी वारंट न निकल जाए, जब तक जो है आने का पुलिस वालों का तो काम ही नहीं. अभी भी आंखों में शर्म नहीं है. अभी भी वो ऐसे घूर रहे हैं हम लोगों को कि ठीक है जज साहब आप भी बोलो, आपके खिलाफ भी कुछ बोलता ही होगा. अब तुम्हें शर्म हो या ना हो, तुम्हारी अपनी जिंदगी है, लेकिन तुमने जो कर्म किए नीचे उसका फल तो भुगतना पड़ेगा तुमको. क्योंकि हम जज को तो इग्नोर नहीं कर सकते जिसने राइटिंग में सब कुछ भेजा हुआ है कोर्ट को. आप पढ़ के आइए, जो करना है करिए. और नेक्स्ट पेशी में इसकी जो सीडी को कोर्ट में इसको पेन ड्राइव में कन्वर्ट करो है, और उसको हम लोग प्ले करेंगे कोर्ट में. श्री रघुवंशे, श्री मोदी फॉर द एप्लीकेंट, श्री मोदी फॉर द स्टेट, श्री रुदावत फर्दर प्रेस फॉर दो ही हैज फाइल्ड a skeleton reply. The criminal trial is going on. Huh?
अगेंस्ट हिम ना? क्या साहब? Right. With a lip service, tendering unconditional apology, and not in the context of the order passed by this court on 13/3/24. After having perused the entire record placed before us, the subject matter issue is of serious nature and requires a detailed hearing. She is reserved on instructions seek further time to address this court and may also file additional pleadings or documents. Hearing is deferred. When do you want? मई? नहीं, पूछ रहा हूँ। डेट चाहिए आपको? बताइए। हाँ, just in the first week of April. Very serious matter. May it be second week? तो फर्स्ट वीक ऑफ मे ले लो। नहीं सर, सेकंड मई तो नहीं चाहिए मुझे। नहीं भाई, ऐसा है अच्छे से पढ़ के आओ। और क्या है, मतलब मैंने कही है कि बाहर रह सकता हूँ बस। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आपसे देख लीजिए, मतलब तसल्ली से बहस करिए। थर्ड वीक कर दो भाई। सेकंड वीक ऐसी कोई खास बात है नहीं, सब फर्स्ट वीक कर दें बस। 2 या 3 तारीख को मैं नहीं रहूँगा। हाँ, तो जब 2-3 को नहीं रहोगे तो आपके जूनियर लोग हैं वो 4 ले लेंगे, उसमें क्या है। और 4 को रहोगे तो 4 को बहस कर देना। चलो।